क्या हाल है सबका, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने दो रिसोर्सेज शेयर किए हैं ग्रुप में। वो आप देख लीजिए। और मैं भी ओपन भी करता हूँ, लेकिन आप लोग भी देख लीजिए जब तक बाकी लोग आते हैं तो। एक दो मिनट वेट करते हैं बाकी लोगों का। तब तक आप लोग उन रिसोर्सेज को देख लें जो सर्फ वाले ग्रुप में मैंने शेयर किए हैं अभी थोड़ी देर पहले। उस्ताद एक दफ़ा रीशेयर कर सकते हैं? मैंने वो ग्रुप बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, मैं अभी यहाँ शेयर कर रहा हूँ, बाद में क्लास के बाद वहाँ शेयर कर दूंगा दोबारा। ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी उस्ताद। चलिए, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़े शायद। लेकिन अगर आपके पास अपने मोबाइल पे है तो उसको आप खोल दें, या कोई और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दे दोबारा से, जो पहले से ग्रुप में है वो दोबारा शेयर कर दें। अच्छा, तो पिछली क्लास में हमने माजी गिरदान याद की थी। सबको याद हो गई है, या दरमियान में टाइम नहीं मिला रिवाइज करने का और भूल गई है? अब सब लोग माइक्स ऑन करें, और बार बार बोलना पड़ेगा इसलिए माइक्स को म्यूट करने की, बंद करने की जरूरत नहीं है। माइक्स ऑन ही रखें सब लोग, और फौरन रिस्पॉन्ड किया करें। जी, हसन, फैजान, हमजा, हामिद, इस्माइल। गिरदान याद हो गई है या याद करने की दोबारा जरूरत है? एक बार फिर थोड़ी देर के लिए दोहरा लें। थोड़ी देर के लिए दोहरा लिया जाएगा तो फ्रेश हो जाएगी। चलिए, तो शुरू कर लें। आपके पास उसकी पिक्चर है, और ये सामने भी आपको नजर आ रही है। जो पहला कॉलम छोड़ के दूसरा जो कॉलम है ना, नसरा वाला, ये हमने पढ़ना है, ठीक है? तो नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। ये पूरा नहीं है, इसमें पूरा इमेज शायद शेयर नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। लेकिन जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था उसमें पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें दो पेजेस होने चाहिए। मैं दूसरा पेज शेयर करता हूँ जिसमें हमने गिरदान पढ़ी थी। उस्ताद अगर ग्रुप में शेयर कर देंगे तो अच्छा, हमजा ने भेज दिया। ठीक है। ग्रुप में भेज दिया मैंने। हाँ जी, हमजा ने भी भेज दिया। नसरा 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 नसरू नसर अब ग्रुप में आ गई है दोबारा, जिन्होंने बाद में भी ज्वाइन किया था वो भी उसको देख सकते हैं, ठीक है? नसरा नसरा नसरू नसर पढ़िए पढ़िए, ऊंचा पढ़िए जी। नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना नसरा नसरा नसरू नसर मुझे सिर्फ नसर एक आवाज आ रही है। नसरना नसरत नसरतुमा नसरा 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 नसरू नसरत नसरा नसरता नसरा नसरू नसरत नसरना नसरत नसरता नसरत नसरतुमा नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरती नसरतुमा 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 नसरतुन्ना नसरतु नसरना नसरा नसरा नसरू नसरा नसरत नसरा नसरता 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 नसरा नसरता नसरता नसरतुमा नसरना नसरतुम नसरता नसरतुमा नसरती नसरतु नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुमा नसरती नसरना नसरतुन्ना नसरतु नसरा नसरना नसरा नसर नसरा 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 नसरू नसरू नसरत नसरत नसरता नसरता नसरत नसरना नसरना नसरता नसरतुम नसरतुमा नसरतुमा नसरतु नसरतुम नसरती नसरती नसरतुमा नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतुन्ना नसरतु नसरतु नसरना नसरना नसरा 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 नसरू नसरू नसरत नसरत
नसरना नसरना नसर नसरना नसरतुमा नसर नसरतुम नसरा नसरतु नसरत नसरो नसरता नसरो नसरना नसरता नसरता नसरतुमा नसर नसरतुम नसरती इधर से भी आप नसरतुमा पढ़ सकते हैं, नसरतुन्ना नसरतु नसरना नसरा नसरा नसरु स्क्रीन से भी पढ़ नसरत सकते हैं। नसरा नसरता नसरा नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना नसरो नसरो नसरा नसरा नसरु नसरत नसरो नसरता नसरना नसरती नसरता नसरतुम नसरतुमा नसरत नसरतुम नसरती नसरता नसरतुमा नसरतुन्ना हामिद, आपकी नसरतु आवाज नहीं आ रही, नसरना हामिद। नसर नसरा 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 नसर नसरा नसरु नसरत नसरता नसरना नसरो नसरता नसरो नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरो नसरती नसरतुमा नसरतुन नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना नसरता नसरा नसरा नसरना नसरु नसरता नसरत नसरता नसरना नसरतुम नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना नसरा नसरा नसरू नसर नसरतुमा हामिद, आप भी पढ़े, हामिद। नसरती नसरो नसरो नसरू नसरत नसरत नसरता नसरा नसरा नसरू नसरना नसरतु नसरु नसर नसरत नसरता नसरता नसरना 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 नसरता नसरता नसरतुमा नसरतुमा नसरतुम नसरतुम नसरती नसरती नसरतुमा नसरतुम नसरतुन्ना नसरतुमा नसरतु नसरतुम नसरना जैद, आप भी ये नसरा गिरदान नसरा पढ़ना शुरू नसरा कर दें। नसरू नसरा नसरा नसरत नसरा नसरा नसरू नसरु नसरत नसरना नसरत नसरतरा नसरता नसरना नसरतुमा नसरना नसरतुम नसरता नसरती नसरतु नसरतुम नसरतुमा नसरतुमान नसरतुम नसरती नसरतुम नसरती नसरती नसरतुमा नसरतुमा नसरतीना नसरतुन्ना नसरतु नसरना। नसरतु नसरा नसरना नसरा नसरू नसरा नसरा नसरु नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा जल्दी नसरतुम शाबाश। नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना नसरो नसरो नसरू नसरत नसरना नसरता नसर नसरा नसरु नसरना नसरत नसरता 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 नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुमा नसरतु नसरतुम नसरती नसरो नसरतुमा नसरा नसरतुन्ना नसरना नसरू नसरतु नसर नसरना नसर नसरत नसरता नसरतुम नसरना नसरतुम नसरता नसरती नसरतुमा नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरना नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुम नसरता नसरता अच्छा, अब आप लोग रुक जाइए। अब आप में ने एक एक करके मुझे गिरदान सुनानी है, बगैर देखिए, स्क्रीन की तरफ ना देखिए। तो सुनाइए जी, पहले हमजा अदनान। नसरा नसरा नसरु नसरत नसरता नसरना नसरता नसरतुमा नसरतुम नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना नसरतु नसरना अच्छा, अगर मैं आपको एक और रूट दे दूं, कतबा, काफ ता बा, इससे सुनाए। हम्म कतबा कतबा कतबु कतबत कतबता कतबना कतबता कतबता कतबतुमा कतबतुम कतबती कतबतुमा कतबतुन्ना कतबतु कतबना एक और रूट में देता हूं आपको, खराजा, निकलना, खराजा, खराजीम। खरजा खरजा खरजू खरजत खरजता खरजना खरजता खरजतुमा खरजतुम खरजती खरजतुमा खरजतुन्ना खरजतु खरजना जो तस्निया मुअन्नस का सीगा है ना, पांचवा, उस पे आप अटक रहे हैं बार बार। इसको पक्का कर लें, ठीक है। ठीक है। जी फैजान कुरैशी, आप सुनाए। हाँ, उस्ताद अभी काफी कमजोरी है, अगर मैं आप बाकियों से काफी देर दोहरा चलें, आप तब तक याद करें। दूं। हसन, आप सुनाए। जी हसन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। जी जी, आप सुनाए मुझे गिरदान। आप मैं देख के ही सुना सकता देख के हूँ, नहीं, मेरे देख, से रेपिटेशन से याद नहीं होता। याद नहीं होता। पहली क्लास में आप थे? नहीं, मैं लास्ट हमने वीक पे था। पहली पहली क्लास में थे आप जब हमने टर्म्स पढ़े थे? नहीं, मैं सिर्फ लास्ट वीक ज्वाइन किया था। से मेरी पहली क्लास थी। अच्छा, हमने पिछली क्लास में इसी बात को एड्रेस किया था कि हम्म। ये कहना कि मुझसे तो याद नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हर इंसान से याद होता है और लाजमी याद होगा अगर पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो आप क्योंकि पहली नहीं क्लास में नहीं नहीं थे और उस्ताद, पिछली क्लास मैं आपने ये नहीं ज्वाइन कह किया, रहा, तो मुझे याद होता है हाँ, वो। नहीं नहीं, ठीक है। सो नहीं, आप आई वाज अगले सेइंग कि मेरे से रेपिटेशन से याद नहीं होता। मैं विजुअली अगर उसको देख के दिमाग में डालूंगा तो फिर मेरे से बेहतर हो। हाँ, लेकिन आपने इसको जुबानी याद भी करना है, रट्टा भी लगाना है। वो मुश्किल काम लग रहा है आपको? वो पूरे बचपन में नहीं लग सका बहुत चीज़ों में। नहीं, अब मैं एक कसम खा के आपको बता रहा हूँ कि लगेगा। बस आपने जहन से ये निकाल देना है कि याद नहीं होता। आप देखेंगे कि याद हो जाएगा सर आपको, ठीक है।
आप एक वीक ले uh, लें। और अभी आज भी हम कुछ पढ़ेंगे, आप हमारे साथ बस रिपीट करना जरूरी है आपके लिए। आप वो रिपीट but करेंगे तो ये in मसला one हल होगा। disclosure I have मेरे पास अल्लाह की तरफ से एक learning, I wouldn't say disability, लेकिन hearing से मैं I'm not able to um, get it in my mind, लेकिन अच्छा। visually अगर उसको देख के करूंगा तो मैं इसे instantly हो जाएगा। So इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा सा फोकस करके देखूंगा एंड मैं आपको बगैर देखे पूरा सुना दूंगा। जी जी, बस आप देख के बेशक पढ़े, वो तो जाहिर सी बात है, पहली दफा हर कोई देख के पढ़ता है, लेकिन आप याद कर लेंगे ना, जबानी तो आप पढ़ सकेंगे ना। जी जी, वहाँ एक दफा मैं देख के मेरे आई कैन विजुअली मेमोराइज इट, तो मैं वो कर हाँ सकता तो हूँ। ठीक, ठीक है, बस आप याद करना जरूरी है। उसकी वजह ये है रट्टा लगाने की कि बहुत से अल्फाज होते हैं उसमें, अगर आपको जबानी याद ना हो ना, तो कुरान में या हदीस के टेक्स्ट में तो आप उसको फौरन कैच नहीं करते, फिर आपको बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर आपने रट्टा लगाया होता है तो बंदा फौरन पहुंच जाता है। इसलिए हम मजबूरी है हम्म, हमारी कि हम पढ़ते हैं और ये रट्टा लगाते हैं, और ये तरीका ही है ये इसका याद करने का। ठीक है, ठीक है। चलें, जजाकुमुल्लाह। और फैजान आप सुना सकते हैं, फैजान या हामिद या इस्माइल। जैद आप सुना लें। जी कर सर। जी जी। अ, जी जी, गिरदान कौन सी सुना रही थी, एक दफा फिर रिपीट कर देंगे? किसी से भी सुना लें, फाला से सुना लें, माजी की गिरदान कोई भी हो, अच्छा चलिए कोई भी ठीक है। रूप हो। फाला, फाला, फालू, फालत, फालता, फालना, फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, फालतू, फालना। शाबाश। एक और रूट से सुनाए मुझे, नस्वारा से, जो सामने गिरदान लिखी हुई है इसको देखना नहीं है, बस आपने सुनाना है सिर्फ। नस्वारा। जी, नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। और कशफा से सुना लें, काफ शीन फा। कशफा, कशफा, कशफू, कशफत, कशफता, कशफना, कशफता, कशफ्तुमा, कशफ्तुम, कशफ्ती, कशफ्तुमा, कशफ्तुन्ना, कशफ्तु, कशफना। जजाकुमुल्लाह। अच्छा जी, इस्माइल आप सुना लें। इस्माइल। जी शुरू हो जाए। इस्माइल आपको आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम दिलवी। वालेकुम सॉरी, सलाम जी। लास्ट जी क्लास जी, में आप था गिरदान सुना। नहीं, तो आई एम रियली पहली सॉरी। क्लास मैं में थे? लास्ट क्लास नई क्लास मैं अटेंड नहीं कर सका था, एक अर्जेंट टास्क आ गया था। अच्छा। लेकिन और इंशाल्लाह टर्म्स वाली मैं क्लास? इस हाँ, टर्म्स वाली क्लास में टर्म्स वाली नहीं क्लास। अच्छा, तो आपने पिछली क्लास में हमने ये रट्टा लगाया है गिरदान का, तो आपने वो याद करना है। ठीक है, मैंने ग्रुप में इसके वो भी भेजे हुए हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजी हुई है, आप उनको सुन लें और उसको याद कर लें प्लीज। बहुत जरूरी है, याद करने के बगैर गुजारा नहीं होगा, वरना फिर आप मेरे हर को लम्हे अटकेंगे और आपको फिर अरबी मुश्किल लगेगी शुरू से ही। ठीक हो गया? मुझे भाई इंशाल्लाह अच्छा। जी, अब कौन रह गया? मेरे ख्याल में फैजान और हसन और हामिद ने नहीं सुनाया। हसन की तो बात हो गई है, हामिद और फैजान। आप लोग जल्दी कीजिए, आप रिस्पॉन्ड करने में बहुत देर लगा रहे हैं, हमारे जी, पास 40 मिनट उस्ताद होते मुझे हैं ना, मुश्किल से तो। जी जी। माजरत उस्ताद, मैं पिछली क्लास में नहीं था, मगर इसकी काफ़ी कच्ची याद है। तो सुना नसरा, लें, ट्राई नसरू, कर लें। नसरा, नसरा, नसरू, नसरतु, नसरता, नसरना, नसरतु, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। फाला, आपके फालू, पहले जी जी, 6 कच्चे हैं, बाकी 8 ठीक है, पहले 6 को पक्का याद कर लें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी फैजान आप कर लें ट्राई। उस्ताद मैं ही फैजान था। अब मैं फाला की गिरदान कर लूँ दोबारा? जी जी, आपने सुना दिया था। जी, मैंने अभी जो बहुत कच्चा सुना है वो मैंने सुना। अच्छा, तो कौन रह गया? हामिद। हामिद मेरे ख्याल में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मुझे भूल रहा है कि मैंने किस किस की सुनी है अभी तक गिरदान। जिसने नहीं सुनाई वो खुद वॉलंटियर करे, बता दे।
उस्ताद आपने सारों की सुन ली, खाली हामिद रह के मेरे ख्याल से वो उनकी ऑडियो में मसला है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मैं मैसेज करता हूँ। चलें। अच्छा, अब आप लोग तवज्जो से अगली चंद मिनट की मेरी बात सुन लें। जो अरबी है ना, उसमें हम पहली क्लास में, टर्म्स वाली क्लास में बात कर चुके हैं कि अरबी में जो वर्ब है फेल, ठीक है, उसके या तो रूट लेटर्स 3 होंगे या 4 होंगे। ये वाली बात याद आ रही है सबको? सब माइक्स जी ऑन जी। रखें और जी सब फौरन रिस्पॉन्ड कर दिया करें, ठीक है? तो जी 3 रूट्स होंगे तो उसको क्या कहेंगे जी? जिसके रूट लेटर्स 3 हो वो क्या उसको क्या कहेंगे? टर्म क्या है उसके लिए? सुलासी। बस। सुलासी सा से है और सा पे पेश है, तो सुलासी, इसको सलासी नहीं पढ़ना। ठीक हो गया? अच्छा, और अगर रूट लेटर्स 4 हो तो क्या कहेंगे? रुबाई। रुबाई। ठीक है, रुबाई। और फिर बात ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके रूट लेटर्स तो 3 हो लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड हुए होते हैं रूट लेटर्स के अलावा। वो जो एक्स्ट्रा लेटर ऐड हुए होते हैं वो रूट लेटर्स नहीं होते, वो वैसे ही होते हैं, वो पैटर्न का हिस्सा होते हैं। तो अगर किसी लफ्ज में सिर्फ रूट लेटर्स हो, एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड ना हुए हो, उसको क्या कहेंगे? भूल गया। अगर याद नहीं आ रहा तो कम से कम ये कह दें कि दोबारा बता दें। दोबारा बता दो। जी जी, क्योंकि मुझे वेट करना पड़ता है, तो अगर नहीं समझ आता तो आप बता दें कि भूल गया, मैं बता दूंगा। तो याद रखें, अगर रूट लेटर्स 3 हो और सिर्फ रूट लेटर्स हो तो उसको कहते हैं सुलासी मुजर्रद। ठीक है। अगर रूट लेटर्स 3 हो लेकिन कुछ लेटर्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हों जो रूट लेटर्स ना हो बल्कि वैसे ही पैटर्न का हिस्सा हो, क्योंकि अरबी में पैटर्न्स बहुत होते हैं, तो बाज दफा लेटर्स होते हैं वो पैटर्न का हिस्सा होते हैं, वो रूट लेटर्स नहीं होते, ठीक है? उसको कहेंगे सुलासी मजीद फी। तो सुलासी मुजर्रद जिसमें सिर्फ 3 रूट लेटर्स हों, और सुलासी मजीद फी जिसमें 3 रूट लेटर्स के अलावा एक्स्ट्रा लेटर्स भी ऐड हुए हों मगर वो लेटर्स जो एक्स्ट्रा हैं वो रूट लेटर्स ना हो। याद है? समझ आ गया? यही हाल रुबाई का है। रुबाई में 4 रूट लेटर्स होते हैं, और अगर 4 लेटर, सिर्फ 4 रूट लेटर्स हों, एक्स्ट्रा लेटर कोई ऐड ना हुआ हो, उसको कहेंगे रुबाई मुजर्रद। लेकिन अगर रूट लेटर्स तो 4 हों लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड हुए हों, वो रूट लेटर्स ना हो, वैसे ही एक्स्ट्रा पैटर्न का हिस्सा हो, उसको कहेंगे रुबाई मजीद फी। समझ आ गई ये वाली बात? जी जी जी। हाँ, एक बार दोहरा दीजिए। एक बार आप गौर से सुनिएगा प्लीज, बहुत आसान बात है, मुश्किल कोई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि रूट लेटर्स, अब रूट लेटर्स का लफ्ज बार बार कहना पड़ता है तो इसकी बजाय मैं अब उर्दू का टर्म यूज करूंगा, हरूफ असली। ठीक है। तो फेल के, वर्ब के हरूफ असली या तो 3 होंगे या 4 होंगे। अगर हरूफ असली 3 हो तो उसको कहते हैं सुलासी, अगर हरूफ असली 4 हो तो इसको कहते हैं रुबाई। ये समझ में आ गए? जी ठीक है। तो फेल में कभी 5 हरूफ असली नहीं हो सकते। हरूफ असली या तो 3 होंगे या 4 होंगे, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते और 3 से कम नहीं हो सकते। समझ गए? जी। ये हम पहली क्लास में कर चुके बात। फिर बाज दफा फेल में हरूफ असली तो 3 होते हैं, सुलासी होता है, लेकिन उसमें कुछ अल्फाज ऐड हुए होते हैं शुरू में या दरमियान में, वो हरूफ असली नहीं होते, रूट लेटर्स नहीं होते वो, लेकिन वो एक खास पैटर्न का हिस्सा होते हैं कुछ अल्फाज। अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे उसकी। तो हरूफ असली 3 होते हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लेटर साथ में ऐड हुए होते हैं, तो उसको हम कहेंगे सुलासी मजीद फी, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 रूट लेटर्स नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा लेटर्स भी ऐड हुए हुए हैं। इसको मजीद फी कहते हैं। मजीद का मतलब उर्दू में यही होता है ना, ज्यादा, जिसमें हरूफ ज्यादा हो, 3 से ज्यादा हो, लेकिन जो ज्यादा हरूफ हैं वो हरूफ असली ना हो बल्कि वैसे ही साथ लगे हुए हों, तो इसको कहेंगे सुलासी मजीद फी। लेकिन अगर किसी फेल में सिर्फ और सिर्फ हरूफ असली हो 3, एक्स्ट्रा कोई लेटर ऐड ना हुआ हो, उसको कहते हैं सुलासी मुजर्रद। ठीक हो गया? तो मुजर्रद जिसमें रूट लेटर्स के अलावा कुछ ऐड ना हुआ हो, और मजीद फी जिसमें रूट लेटर्स के अलावा उस्ताद कुछ जी। और लेटर्स भी ऐड हुए हों। उस्ताद जी, समझ आ गई? जी जी। ये मुजर्रद का क्या मतलब होता मुजर्रद का लिटरल मीनिंग तो होता है वो जिसके साथ कुछ ना लगा हो। यानी उर्दू में इसको कहते हैं ना कि बगैर लिबास के हो कोई, यानी
ठीक है, समझ रहे हैं? मुजर्रद का लिटरल मीनिंग है होता है नंगा, जिसके जिस्म पे कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ये भी वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ कुछ भी ऐड ना हुआ हो। ठीक है सर। ठीक हो गया। तो सुलासी मुजर्रद क्या होगा? जिसके रूट लेटर्स 3 हो और कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड ना हुए हों। और सुलासी मजीद फी क्या होगा? जिसके रूट लेटर्स 3 हो और कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड हुए हों। इसी तरह रुबाई मुजर्रद जिसके रूट लेटर्स 4 हो और कोई एक्स्ट्रा लेटर ऐड ना हुआ हो। रुबाई मजीद फी जिसके रूट लेटर्स तो 4 हो लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स ऐड हुए हों। यहाँ तक समझ आ गया? तो अब जी फेल की उस्ताद। 4 कैटेगरीज हो जाएंगी फेल की। एक होगा सुलासी मुजर्रद, एक होगा सुलासी मजीद फी, एक होगा रुबाई मुजर्रद और एक होगा रुबाई मजीद फी। इस तरह ये 4 जो है ना वो वर्ब की टाइप्स हो जाएंगी। समझ आ गई? उस्ताद उस्ताद जी, जी। जी जी। ये आपने रुबाई मुजर्रद में क्या लिखा हुआ है? बाप फाल लहू। वो फालला नाम है उसका, बाप का नाम है फालला। फालला, ठीक हो गया चलिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अरबी में ना एक बड़ी खूबसूरत बात है। हम पहली क्लास में भी कर चुके हैं कि अरबी जो है ना वो पैटर्न्स की जबान है। इसमें बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत पैटर्न्स होते हैं। तो और ये पैटर्न्स अंग्रेजी में नहीं हमें नजर आते, उर्दू में भी नजर नहीं आते। ठीक है, उर्दू में अगर नजर आते भी हैं तो वो अरबी के ही बोरो किए होते हैं, अपनी उर्दू के अपने कोई खास नहीं है। तो अब इंग्लिश में आप देख लें, वर्ब बहुत तरह का होता है, यानी ऐसे वर्ब्स, और वर्ब्स कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, कुछ वर्ब्स होते हैं 3 लेटर के जैसे ईट, कुछ होते हैं 4 के जैसे रीड, कुछ होते हैं 5 के जैसे स्पीक, कुछ होते हैं 6 के, कुछ होते हैं 7 के, कुछ 10 के, 20 लेटर्स का भी वर्ब हो सकता है अंग्रेजी में। ठीक है, और उसमें भी कोई पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स कि ये 10 20 50 लफ्ज इस पैटर्न के हैं, फिर ये 200 लफ्ज इस पैटर्न के हैं। ऐसे कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन अरबी में है। तो अरबी में जो फेल है ना उसके टोटल मिला के 18 पैटर्न हैं। कितने हैं? 18। 18। ठीक हो गया। अबवाब 18। ठीक है, उन पैटर्न्स को हम अबवाब का नाम देते हैं। तो अरबी में फेल उन्हीं 18 में से एक पैटर्न पे होगा, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं होगा। अरबी में फेल उसी तरह का होगा। तो इसको फायदा ही होता है, पहचानना आसान होता है कि ये फेल है क्योंकि इस पैटर्न पे आ रहा है। ठीक हो गया? जी जी कर सर। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है? नहीं नहीं। कर। नहीं नहीं। हमजा, फैजान, हसन, जी रोहेल। कर सर, बिल्कुल सही हो। ठीक है। तो जी अच्छा, अब पूरी अरबी में फेल के 18 पैटर्न्स हैं। वो 18 भी आप इन 4 टाइप्स में डिवाइड कर लें: सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी। तो सुलासी मुजर्रद के हैं 6 पैटर्न्स। कितने हैं? 6। हम्म। सुलासी मजीद फी के हैं 8। वो मैंने लिख लिख दिए आपको, जो आज एक मैसेज भेजा है। ठीक है, तो 8 पैटर्न्स हैं सुलासी मजीद फी के। एक है रुबाई मुजर्रद का और 3 है रुबाई मजीद फी के। तो रुबाई वाले कम है, यानी रुबाई मुजर्रद का सिर्फ एक और रुबाई मजीद फी के सिर्फ 3। तो टोटल मिला के रुबाई के 4 हैं और सुलासी के 14 हैं। ठीक है, 8 और 6 14। ये याद रहेंगे? जी जी कर सर। 6 8 1 3, 6 8 1 3, 6 8 1 3। 6 हैं सुलासी मुजर्रद के, 8 हैं सुलासी मजीद फी के, और एक है रुबाई मुजर्रद का और 3 है रुबाई मजीद फी के। ठीक हो गया? जी जी कर सर। कर रोहेल। सर, जी जी जी। ये मजीद फी बे हमजा वसल और बा हमजा वसल में क्या फर्क है? अच्छा, अभी इसको फिलहाल अगर आप इग्नोर कर लें तो बेहतर है। आप फिलहाल ये कर लें कि सुलासी मजीद फी है ना दोनों, तो बस जी सुलासी जी मजीद फी समझ लें। अब आपने ठीक है। पूछ लिया तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि जज़ाकल्लाह। हमजा वसल कहते हैं उस हमजा को जो गिरने वाला हो, जो गिर जाता हो, बिल्कुल। मिलाते वक्त गिर जाता हो। और बे हमजा वसल से मुराद वो है जिसमें गिरने वाला हमजा ना हो। तो जी बा हमजा वसल जिसमें गिरने वाला हमजा हो। आप देखें जो बा हमजा वसल है ना उसमें एक इजतनाबा है और इज्तिनाब है और क्या कहते हैं, इफ्तिआल, इफ्ताल इस्तिफाल और इस्तिफाल इन्फियाल और है। इकबाल। इन शुरू में हमजा आ रहा है ना, ये हमजा गिर जाता है बाद में। हमजा गिर जाता है बाद में। ठीक हो गया? और अफ़ाल का हमजा उसी तरह रहते हैं।
वो उसका हमजा नहीं गिरता, उसका हमजा पक्का हमजा है, उसको वसली नहीं कहते, उसको हमजा कतई कहते हैं, ना गिरने वाला हमजा, एब्सोल्यूट हमजा। ठीक है जज़ाकल्लाह। उस्ताद, मैं आपकी स्क्रीन जी। नहीं देख सक रहा, बस उस पे ही लिखा आ रहा है कि अब्दुल कदीर खान स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। आपने शायद लेट ज्वाइन किया है। नहीं, अब आ नहीं, गया, अब अब नजर वापस आ आ गया। चलिए, अच्छा। तो 18 पैटर्न्स अरबी में हैं फेल के, उनको हम अबवाब कहते हैं। ठीक है, उनको अगर हम इन 4 किस्मों में तकसीम कर लें तो 6 सुलासी मुजर्रद के हैं, 8 सुलासी मजीद फी के हैं, 1 रुबाई मुजर्रद का है और 3 रुबाई मजीद फी के हैं। अब आप वो जो डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया है पीडीएफ का 2 पेजेस का, उसमें आप देख लें तो उसमें ये सारे 18 पैटर्न्स दिए हुए हैं। मैं अभी दोबारा वो डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, 1 मिनट मुझे दे दीजिए। अब देखें आप, पहला कॉलम तो ना लेबल्स का है ना, वो सीगे का नाम है, वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, पहले कॉलम को छोड़ दें। दूसरा कॉलम जिसके ऊपर लिखा हुआ है नसरा, अब ये पहला पैटर्न है। ठीक है, नून सादरा तीनों पर जबर, नजर आ रहा है सबको? जी, ठीक है सर। जी। जी जी जी। अच्छा, फिर इसके साथ दूसरा पैटर्न है ज़ोराबा, उसमें भी 3 रूट्स हैं। ठीक है, 3 रूट लेटर्स हैं और एक्स्ट्रा कोई लेटर ऐड नहीं हुआ, तो ये जी भी सुलासी मुजर्रद है और इसमें भी तीनों पर जबर है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई नसर और ज़रबा में कोई फर्क नहीं है, दोनों पर तीनों पे दोनों में तीनों लेटर्स पे जबर है। तो हाँ, जी सर। माजी में इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब मुजारे में जाएंगे ना, उसमें इनमें फर्क आ जाएगा, इसलिए हमने इनको अलग अलग पैटर्न समझा हुआ है। ठीक हो गया। जी कर सर। अगला है समिया, इसमें फर्क नजर आएगा आपको, क्यों? क्योंकि इसमें दरमियान वाले लफ्ज पे जेर है समिया, तो ये एक और पैटर्न आ गया, तीसरा पैटर्न। चौथा फिर फतहा है, वो फिर नसरा और जरबा की तरह लग रहा है, लेकिन इसका भी मुजारे मुख्तलिफ है, इसलिए हमने इसको अलग पैटर्न बनाया हुआ है। तो आपके पास सामने 4 पैटर्न आ गए। अगला है हसीबा। हसीबा और समिया बिल्कुल एक वजन पे है, सीन समिया में भी जेर है मीम पे, दरमियान वाले कलिमे पे हसीबा में भी जेर है। ठीक है, अब इन दोनों में भी मुजारे मुख्तलिफ है, इसलिए अलग पैटर्न बन गए। ठीक है, माजी दोनों का सेम है इधर। और तीसरा है करूमा, उसमें क्या है, दरमियान वाले पे पेश है, दरमियान वाले पर पेश है, करूमा। तो ये 6 पैटर्न्स हो गए, नसरा, जरबा, समिया, फतहा, हसीबा, करूमा, 6। ये सुलासी मुजरद के हैं। इनमें देख लें कोई एक्स्ट्रा लेटर ऐड नहीं हुआ, इसीलिए इसका नाम सुलासी मुजरद है। रूट लेटर्स 3 है सुलासी, और कोई एक्स्ट्रा लेटर ऐड नहीं हुआ तो मुजरद। जी समझ कर। गए? जी कर। अब अगले उस्ताद, 5 को मेरी देखें। अंडरस्टैंडिंग इधर थोड़ी वीक है। पूछ लीजिए। मुझे ये समझ नहीं आ जी, रहा कि फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा राइट पे अगर स्क्रॉल करें, क्या करूं? हल्का सा राइट अगर आप जाएं, राइट राइट पे जो पहली शुरू की जो 2 कॉलम है। जी जी जी। हाँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इधर फतहा और दरबा के वजन में क्या फर्क आ रहा है। यही तो मैंने अभी बताया है कि दोनों का माजी बिल्कुल एक है, 3 लोग लफ्जों का, नसरा का भी, ज़रबा का भी, फतहा का भी बिल्कुल माजी सेम है। इसी तरह जो तीसरा वाला है ना समिया, और जो पांचवा वाला है हसीबा, इनका भी बिल्कुल सेम है माजी। नजर आ रहे हैं ना आपको? जी 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 ये सेम है, लेकिन माजी में तो ये सेम है। इनका जब हम मुजारे पढ़ेंगे ना, पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, जिसको मुजारे कहते हैं, जी पिछली क्लास में हमने ये टर्म पढ़ी थी, वो जी। मुख्तलिफ है, इसलिए हमने इनको अलग पैटर्न बनाया हुआ है। ओके ओके, ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो अगर आप इन 3 को निकाल लें तो माजी में फिर पीछे बचते हैं। माजी के, सिर्फ माजी के जो पैटर्न हैं वो 18 नहीं है, वो बल्कि 15 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जी इसमें सर। 3 जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं पैटर्न। सर जी, एक मेरे भी सवाल का जवाब दे देंगे? जी एक सवाल का और जवाब दे देंगे? जी जजाकल्ला। जी, पूछ लें, जरूर करूमा का पूछ। क्या मतलब है? करुमा का मतलब इज्जत वाला होना। इज्जत वाला होना। अभी आप मतलब को फिलहाल चलो, छोड़ दें, इधर फिलहाल से हम एक है जी। पैटर्न समझ रहे हैं, पहले काम ना। पैटर्न्स का है, ट्रांसलेशंस बाद में। जी जी। ठीक हो गया। जी अच्छा, बिल्कुल। अब ये 6 हो गए सुलासी मुजरद के, जिनमें सिर्फ 3 हरूफ असली हैं और कोई एक्स्ट्रा लेटर ऐड नहीं हुए। अब अगले पे आ जाएं। अगले पांच को देख लें, इकट्ठे हैं 5। अकरमा, सर्रफा, ज़ारबा, तसर्रफा, तकाबला, ये 5। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ना, ये 5।
ठीक है, ये 5 पैटर्न नजर आ रहे हैं, ये क्यों हिल रहा है बार बार? अच्छा, ये 5 अब नजर आ रहे हैं सबको? जी जी। इन 5 ये हैं सुलासी मजीद फी के। अब आप इनमें से एक्स्ट्रा जो लेटर है उसको आइडेंटिफाई करें। अकरमा में शुरू में क्या आ रहा है? अलिफ। अलिफ। हम अलिफ नहीं, हमजा। इसको हमजा कहते हैं। हमजा। हमजा। अलिफ और हमजा में फर्क आज समझ लो, आइंदा काम आएगा। जिस पर जबर जेर पेश हो उसको हमजा कहते हैं, जिस पर जबर जेर पेश ना हो उसको क्या कहते हैं? अलिफ कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस शुरू में हमजा आ रहा है तो इस पैटर्न की अलामत यह है, पहचान यह है कि इसके शुरू में हमजा आता है। अक्रमा, अरसला, अनवरा, अजहरा, असलमा, इस तरह के बेशुमार अल्फाज है अनआमा अरबी में जिनके शुरू में हमजा आ रहा है। तो ये एक पैटर्न है सुलासी मजीद फी का। ठीक है। अगला पैटर्न है सर्रफा। ठीक है, इसमें क्या तब्दीली आई है? रा एक एक्स्ट्रा है। जो रा एक दरमियान वाला है उस पे शद है। दरमियान वाले पे क्या है? शद शद है। है। इस तरह आप करें बदला, जर्रबा, अल्लमा, ठीक है, सर्रफा, नस्सरा। इस तरह किसी भी लफ्ज से आप बना सकते हैं जिसके दरमियान वाले कलमे पे सेकंड लेटर पे शद आ रही है। इसकी ये पहचान है। ठीक हो गया? तो इसमें दरमियान वाला लफ्ज एक दफा रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम सलासी मजीद फी कहते हैं। वो ज्यादा है, 3 से ऊपर हो गया, ये 4 हो गए ये। ठीक है, जी। क्योंकि जी कर शद वाला जो है ना जी वो 2 सर। दफा आ रहा है। ठीक है। जी जी उस्ताद। जी। अच्छा, तीसरे को देख लें, तीसरे में क्या फर्क है? आइन। अलिफ है। तो तीसरे में जो है ना पहले लेटर के बाद अलिफ आ रहा है। क्या आ रहा है? अलिफ। अलिफ आ रहा है। तो इस पैटर्न का की पहचान यह है कि इसमें पहले लेटर के बाद अलिफ आता है। ठीक है, जैसे ज़ारबा, जाहदा, ठीक है, क़ातला, ये सारे एक पैटर्न के अल्फाज हैं जिनमें पहले लेटर के बाद अलिफ आ रहा होता है। ठीक है। और जो चौथा है, फोर्थ, इसमें 2 एक्स्ट्रा लेटर्स हैं। एक शुरू में ता आ रही है और एक रा पे शद आ रहा है। ठीक है, तो वो भी 2 हो गए हैं। तो साद, रा, फा इसके हरूफ असली हैं। ता शुरू में एक्स्ट्रा है, और जो सेकंड लेटर है रा उस पर शद आई हुई है। ठीक है, तो इसमें 2 लेटर्स एक्स्ट्रा हैं, ता और एक एक्स्ट्रा रा। तसर्रफा। इसी तरह सॉरी सही। तकब्बल है। ठीक है, तजर्रबा, ठीक है, तजक्करा, तफक्करा, ये सारे अल्फाज इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। इनमें शुरू में ता और सेकंड लेटर पे शद, ये एक्स्ट्रा है। ठीक हो गया? जी सर। जी। और जो पांचवा नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, वो है तकाबला। अब इसमें शुरू में ता और काफ के बाद जो अलिफ है ये एक्स्ट्रा है। यानी असल इसके हरूफ असली हैं काफ, बा और लाम। पहला है काफ, दूसरा है बा, तीसरा है लाम। तो काफ से पहले ता और काफ के बाद अलिफ, ये ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको सुलासी मजीद फी कहते हैं। ठीक हो गया? जी। जी कर सर। अब अगले जो 3 हैं उनको भी देख लें। जी सर। ये जो अब स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको, इक्तसबा, इस्तखरजा और इनसरफा, 3। जी। आप लोग देखते रहिए साथ साथ। शेख हमजा तो नहीं आ गए क्लास के लिए? जी हमजा सर। भाई आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप अस्सलाम। खत्म कर लें। हजरत हमारी क्लास लेट शुरू हुई थी 9:15 पे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको जल्दी है तो आप ले लें, टाइम ले लें। नहीं, कोई मसला नहीं। बस थोड़ा वेट कर लें, मैं जल्दी से ये काम खत्म करवा दूं। अच्छा, इन तीनों में शुरू में हमजा आ रहा है तीनों में, और उस हमजा पे जेर है। इक्तसबा, इस्तखरजा और इनसरफा में। तो ये हमजा एक्स्ट्रा है इनमें। ठीक है। और सिर्फ हमजा एक्स्ट्रा नहीं है, और भी कुछ लेटर्स एक्स्ट्रा आए हुए हैं। जैसे जो पहला पैटर्न है इक्तसबा, इसमें तीसरा जो लेटर है ना ता, ये भी हाँ। एक्स्ट्रा है। तो ये इसकी पहचान है, हमजा शुरू में जेर वाला हमजा और तीसरे नंबर पे ता, ये इसकी पहचान है। अब इक्तसबा और इह्तसबा और इज्तनबा, इंतज़रा, ये सारे अल्फाज इसी पैटर्न पे हैं। इसमें शुरू में हमजा जेर वाला और तीसरे कलमे पे ता जायद है, इसीलिए इसको सुलासी मजीद फी कहते हैं। जो अगला पैटर्न है
उसमें हमजा, सीन और ता शुरू में, पहले तीनों लेटर्स ये एक्स्ट्रा हैं। उस्ताद जी। इस्तखरजा या इस्तगफरा या इस्तकबला, इस्तामला, ये सारे अल्फाज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल, इस्तिखराज, इस्तिगफार, इसमें हमजा, सीन और ता एक्स्ट्रा है। और रूट लेटर्स क्या है? खा, रा, जीम या गाइन फारा या आइन मीम लाम इस्तामला में, और इस्तगफरा में गाइन फारा हरूफ असली है। ठीक हो गया? उस्ताद जी। जी जी। उस्ताद जी, ये सिलासी मजीद फी है। जी ये सारे सुलासी मजीद फी हैं। आपने कुछ ऐसा नहीं बताया था कि तीन से ज्यादा कम नहीं होंगे, चार से ज्यादा नहीं होंगे, तो इनमें पांच नहीं आ रहे? यही तो मैं बता रहा हूँ ना, हम बात कर चुके हैं कि वो हरूफ असली, रूट लेटर्स की बात की थी हमने, कि रूट लेटर्स तीन ओके होंगे या ठीक चार है। होंगे। अब मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें सही। हमजा, सीन और ता ये एक्स्ट्रा है, ये पैटर्न का हिस्सा है। अब वाव की अलामत है, बाब की अलामत है। सही, जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा, और तीसरा है इन सराफा, इसमें शुरू में हमजा और दूसरे नंबर पे नून, ये एक्स्ट्रा है। इन सराफा। और हरूफ असली क्या है? साद, रा और फा। इस तरह अभी आप लोगों ने गिरदान पढ़ी एक कशफा की, उसी कशफा में अगर आप हमजा और नून लगा लें तो इन कशफा हो जाएगा। उर्दू में हम कहते हैं ना इंकिशाफ हुआ। ठीक है। इस तरह काफ लाम बा, इसका मतलब होता है पलटना। इसी के साथ आप हमजा और नून शुरू में लगा लें, इनकलाबा हो जाएगा, जो इनकलाब लफ्ज आप सुनते हैं। ठीक है। तो इसमें हमजा और नून एक्स्ट्रा है, इस पैटर्न में शुरू में आते हैं दोनों, पहले और दूसरे नंबर पे। और आखिरी जो तीन लेटर्स हैं, हुरूफ है, वो हुरूफ असली हैं। ठीक हो गया। रुबाई के फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। ठीक है अब सर। आपने करना ये है कि माजी की गिरदान है ना, वो आपको गिरदान याद हो गई है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नसरा से करें या आप अकरमा से करें, गिरदान बिल्कुल वही है। नसरा, नसरा, नसरु, अकरमा, अकरमा, अकरमु, अकरमत, अकरमता, अकरमना। इस तरह सर्रफा, सर्रफा, सर्रफू, सर्रफत, सर्रफता, सर्रफना। जाहदा, जाहदा, जाहदू, जाहदत, जाहदता, जाहदना। बिल्कुल वही तरीका है जो आपने नसरा और फ़ाल में याद कर लिया है ना, वही आप इन पैटर्न से भी याद कर सकते हैं। तो इस वीक में आप कोशिश करें कि आप इन पैटर्न से गिरदान पढ़ने की कोशिश करें। और ये जो डॉक्यूमेंट मैंने भेजा है 2 पेजेस का, इसमें सारी गिरदानें पूरी लिखी हुई भी हैं। तो अगर आपको जी उस्ताद देख जी। के पढ़ने से याद होती है तो आप देख के पढ़ें यहाँ से, इस डॉक्यूमेंट से। ठीक हो गया? जी जी उस्ताद। कोई सवाल है तो पूछ लें जल्दी से, वरना ग्रुप में भी पूछ सकते हैं बाद में। जी कर सर। मैं इसकी समरी ग्रुप में भेज दूंगा, सर्फ वाले ग्रुप में, आप जरूर उसको सुनिएगा। ठीक है। और जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, पिछली क्लास में नहीं थे, उनके लिए मैंने ग्रुप में पहले ऑडियो भेज दी है गिरदान की, वो ऑडियो सुने बार बार, उससे आपको याद हो जाएगा। और मैंने पिक्चर्स भी भेज दी हैं इसकी, तो उससे भी आप देख के याद कर सकते हैं। ठीक है। और जो गलतियां हैं लोग करते हैं गिरदान पढ़ने में, उसके लिए मैंने एक अलग वॉइस नोट भेजा है, उसको भी सुन लें कि कौन से लफ्ज आपने गलत नहीं पढ़ने। ठीक है। उस्ताद आप वो वॉइस नोट को दोबारा चैट में भेज सकते हैं? मैं दोबारा भेज देता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमजा अदना से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बताएं कि असाइनमेंट नंबर 2 कैसी रही? आप लोगों ने कर लिया? मुझे अभी तक कोई सबमिशन नजर नहीं आई, या शायद मैंने देखा नहीं। और सा
किसी ने ख़त्म कर लिया असाइनमेंट नंबर 2? स्टार्ट शुरू की हुई है, लास्ट क्वेश्चन पे हूँ। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था बिकॉज अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ रहा, तो कुछ चीज़ें ज़रा उसमें कंफ्यूज कर दी थी। अच्छा जी सर, मैं भी कल परसों तक इंशाल्लाह सबमिट कर दूँगा। अच्छा, ये तो पिछले हफ्ते ड्यू थी। अब तो मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया। माजरत चाहता हूँ सर जी। अच्छा, अल्लाह। मेरा प्लान था कि मैं ये कवर करूं, लेकिन किसी ने सबमिट ही नहीं की, तो फिर इसलिए थिंक आप लोगों को मौका मिलना चाहिए ख़त्म करने का पहले, इसलिए फिर मैं इसको स्किप करूंगा फिलहाल। हम लेसन पे ही चलते हैं, ठीक है। तो मेरा प्लान ये भी था कि मैं नेक्स्ट असाइनमेंट दे दूं कल, लेकिन हाँ, इस तरह तो फिर और स्लो हो जाएगा अगर पिछली ख़त्म ना हो। तो कोशिश करें इंशाल्लाह आज हम फिर वही लेसन नंबर 7 जो है उसको चलाते हैं, क्योंकि वो लास्ट टॉपिक है जो हमने शुरू किया हुआ था। इससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों के असाइनमेंट में इंशाल्लाह। और आज ही सबमिट कर दें, आज तो रात हो गई, उधर कल सबमिट कर दें इंशाल्लाह। चलें तो हम्म, बिस्मिल्लाह। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं? मैंने जी स्क्रीन पे सर जी, मैं पढ़ना बुक चाहता हूँ। रख दिया, तो आप शुरू करें पढ़ना जी। Lesson 7, the genitive of possession, murakkab izafi. The compound in which both parts are nouns and the first noun is related to the second noun is called murakkab izafi. Examples: Kitabu Zaidin, the book of Zaid or Zaid's book. Khatimu Fidda, the ring of silver. Ma'un Nahr, the water of the river. Such a relationship between the two nouns is known as al-izafa. The first part of murakkab izafi is called mudaf, while the second part is called mudafun ilayh. Neither does the definitive article alif lam precede the mudaf, nor is the tanween appended to it. Look at the above examples. Kitabu Zaidin, एक सेकंड। Khatimu Fiddatin. Any questions so far? First 4 points. Okay, so just we can go to the next one just to recap. जी उस्ताद, एक सवाल है। जी जी। जो ये मुजाफ होता है वो इज इट डेफिनेट? Muzaf is definite if Muzaf ilayh is definite. If Muzaf ilayh is not definite, then Muzaf is not definite. ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। उस्ताद So जी, जी जी जी। मुजाफ जो है वो डेफिनेट होता है, लेकिन अलिफ लाम तब भी प्रिसीड नहीं करता जो पॉइंट नंबर 4 कह रहा जी, अलिफ लाम नहीं आ सकता मुजाफ पे, है जी। चाहे वो डेफिनेट हो या डेफिनेट ना हो। जैसे किताबु जैदिन में जो किताब है वो डेफिनेट है। किताबु ज़ैदिन में चूंकि ज़ैद इज मुजाफ, मुजाफ इलैह व्हिच इज डेफिनेट, इज अ स्पेसिफिक पर्सन, इसलिए किताब इज यूजुअली गोना बी स्पेसिफिक बिकॉज इट्स द मुजाफ टू अ डेफिनेट थिंग, इसलिए द बुक ऑफ ज़ैद। ठीक है। जी इवन अगर हम कहें अ बुक ऑफ ज़ैद, मतलब ट्रांसलेशन में ऐसे कहें, even then it's a little bit specified because it's associated with Z. So जी। उस्ताद जी, लेकिन in दूसरी एग्जांपल है वो खातिमु फिद्दतिन, ये तो जनरल नहीं हो जाएगा, वो तो कोई भी सिल्वर रिंग हो सकती है। जी जी जी। हाँ, तो इसके अंदर खातम जो है वो इंडेफिनिट होगा। यहाँ पे लेकिन ट्रांसलेशन में तो द रिंग ऑफ सिल्वर लगा हुआ हाँ, तो मतलब आप इग्नोर कर लें ट्रांसलेशन को अभी। द थिंग इज कि यहाँ थोड़ा सा इसको डिफाइन हो गया ये, मतलब थोड़ा सा स्पेसिफाइड है, क्योंकि द रिंग इज नॉट एनी रिंग, इट्स अ रिंग ऑफ सिल्वर, बट व्हाट काइंड ऑफ सिल्वर इट्स अनसर्टेन, इसलिए। तो आपको याद होगा लेसन 1 में ही था कि मुजाफ इज डेफिनेट इफ इट इज मुजाफ टू अ डेफिनेट मुजाफ इलैह। ठीक है। है। जी सर। इसी में हम देख लेते हैं जस्ट फॉर मेकिंग इट श्योर। लेसन नंबर
ये है number 7 al-muzafu ila ma'rifatin, a noun which is related to any of the above mentioned definite nouns. Kitabu Zaidin, Kitabu Hadha, Kitabu Rajul. In all these cases, the word ila ma'rifatin, this makes it clear that the muzaf ilayh has to be ma'rifa for muzaf to become ma'rifa. Okay, so चल. So कोई और question है? अच्छा, so basically two things. मुरक्कब इज़ाफ़ी में एक मुरक्कब इज़ाफ़ी में एक मुज़ाफ़ होता है which comes first and then मुज़ाफ़ इलैह comes second. So far you've seen that, and these two have a relationship. In the relationship, Urdu में we use the term का, के, की. अगर दो अस्मा के दरमियान ये word आ रहे हैं two nouns के दरमियान, तो फिर usually that's the relationship we're talking about here of इज़ाफ़ा. और one main point उन्होंने बताया number 4 में कि मुज़ाफ can never have alif lam, and तन्वीन भी उस पे नहीं आ सकती. तो इन सारी एग्जांपल्स में किताब ज़ाइदिन, किताब doesn't have alif lam, and kitab doesn't have tanween. And tanween, you know, is the two dhammas or two fatha or two kasra, right? That's called tanween. Okay, keep going. Number 5. कौन पढ़ा था? मुझे आवाज नहीं आ रही है, शायद मेरा कनेक्शन का गड़बड़ ना हो गया. जी There's no one reading. हाँ, If जब you want, पहले I पढ़, can. who was reading earlier? Hamid. Hamid, is Hamid here? जी उस्ताद जी. चलो आप आगे पढ़ें. Number 5. जी उस्ताद जी. The mudaf ilayhi is always majroor in the genitive case. The mudafun always precedes the mudafun ilayhi. The murakkab izafi, like murakkab tawsifi, is not a complete sentence but is part of a sentence. Example, ma'un nahri azbun. The water of the river is sweet. In this sentence, ma'un nahr is the subject while azbun is the predicate. Sometimes there are several mudafun ilayhi in one construction. Example, babu baitil amir, the door of the house of the leader. Babu Baiti Ibn al-Wazir, the door of the house of the minister's son. The middle mudafun ilay becomes the mudafun of the succeeding words. Therefore, alif lam cannot precede it, nor can the tanween be appended to it. You have learned in the first lesson that when an indefinite noun is related to a definite noun, it also becomes definite. Example, Gulamu Zaidin, the slave of Zaid. Gulamur Rajul, the slave of man. The word Gulam, slave, has become definite in these sentences. In Arabic, because the mudafun precedes the mudafun ilayh and no word can interpose between them, the adjective of the mudafun has to succeed the mudafun ilayh. Example, Gulamul mar'atis salih, the pious slave of the lady. In this अच्छा, example, just a second. ये last point हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बात करते हैं. इधर दो काफी important चीजें आई हैं. First of all, let me write the important things. First important thing was that there is no alif lam, and no tanween. So tanween could be any of these things on muzaf. Okay. Second thing जो यहाँ पे है, muzaf ilayh is always majroor. Is always majroor. Genitive case. Third, muzaf always comes first. Precedes. And there is no separation in these two. Yeah. Okay, इसको छोड़ें. ये तो नहीं लिखा हुआ. Ask the Number question. 7. जी. Point 1 meaning no al and no tanween is for both mudaf and mudaf ilayh. No. This is only for muzaf. Okay.
This is only for muzaf. Okay, and this is only for muzaf ilayh. Okay, majroor. This is only for muzaf ilayh. What this means is that there is no rule, like unless there's some other reason for muzaf to become majroor, or if there's some other reason for muzaf ilay to have no alif lam or to have no tanween, that's a separate thing. Okay. समझ आई मेरी बात की? There can be other reasons that muzaf ilay does not have alif lam and does not have tanween. Okay. But the rule about izafa, the concept of izafa, this relationship itself does not impose a rule like having no tanween and no alif lam on muzaf ilay. It just imposes this on the muzaf. Similarly, there can be other reasons that the muzaf can become majroor. But the relationship of izafa only imposes the rule about keeping muzaf ilay majroor, not muzaf. Okay. Okay, so now number 7 is about when you join murakkab tawsifi. Oh no, that's gonna come later. So what they're saying here is that like murakkab tawsifi, murakkab izafi is not a complete sentence. I think this should be obvious because we're talking about naqis murakkab compounds. So here ma'un nahri azbun, this is mudaf ilayh. Ma is mudaf and nahr is mudaf ilayh. This whole thing becomes the subject meaning mubtada. Okay, and this azb is the last word here, is the khabar. Predicate is the khabar. And jumla ismiya, you guys saw this earlier. There are two parts in jumla ismiya. First is mubtada, second is khabar. So mubtada is the subject. So you can see the phrase ma'un nahr becomes the mubtada. Okay. So this was an example. Number 7. This was an example of a sentence. How to use a mudaf ilayh pair, mudaf ilayh pair in a sentence. Number 8 is saying that you can have a success like a train of mudaf and mudaf ilayh, and we did this in the past. Remember Maliki Yawmiddin. So we covered this in earlier lesson that Maliki Yawm is the first mudaf ilayh pair. In the first pair, Yawm is mudaf ilayh. So because it's mudaf ilayh, it's not gonna get alif lam, is not gonna get tanween. Okay. And sorry. So because it's mudaf ilayh, it is gonna be majroor. So meaning it can only be yawmin or it can only be yawmi. These are only two possibilities because of rule number 2. Okay, because of rule number 2, the word yawm can only be the word yawm can only be yawmin or yawmi because of because it has to be majroor. And the word malik can not have alif lam and cannot have a tanween. So hence you have maliki, single kasra. Why there's a kasra and not a dhamma and not a fatha is outside the scope of izafa. Okay, it's there. It's very simple. We can, if you look at the previous verse, we can easily get it. But you apply the rules that you've seen here. Muzaf cannot have alif lam, and so the word malik is not al malik. And even though Allah Ta'ala is al malik, right, the king. And similarly, no tanween. This rule is applied here. So now muzaf ilayh, which is word yawm, can be one of these two here. But because the yawmiddin is, again, the word yawm is muzaf here in the second pair, where in the second phrase, ad-din is the muzaf ilayh. Hence, it cannot have tanween. This cannot have tanween. So this is now removed. So only possibility of yawm is yawmi. Make sense? The word yawm is muzaf as well as muzaf ilayh at the same time. Make sense? So here, another example, Babu Bait al-Amir. The bait, or the word bait, is muzaf ilayh for Bab, and it is muzaf for al-Amir. Okay?
The word ad-din can have alif lam because this is not a mudaf to anything. If it had been mudaf to something, the alif lam would have been removed, right? All right. And they give another example where there are 4 words. So here, bait and ibn, both of these are both. Like both of these are muzaf, and muzaf ilayh. So you can, do your analysis if you want later, inshallah. So let's go on. Number 9 was about, ma'rifa and nakiras. I think we talked about it already. Number 10 is where you combine things. Combine murakkab izafi and murakkab tawsifi. So anyone read number 10 again? Yeah, Hamid. Hamid. Ji Ustad ji, bas ek second, sorry. I had to unmute myself. Okay. Ji Ustad ji. Number 10. Number 10. Yes. Bismillah. In Arabic, because the mudafun precedes the mudafun ilayh and no word can interpose between them, the adjective of the mudaf has to succeed the mudafun ilayh. Sorry. Let me repeat it, please. In Arabic, because the mudafun precedes the mudafun ilayh and no word can interpose between them, the adjective of the mudafun has to succeed the mudafun ilayh. Example, Ghulamul mar'ati salih, the pious slave of the lady. In this example, the word as-salih is the adjective of the word ghulam. Therefore, it is marfu, singular, masculine, and definite. Here under are more examples. Understand the differences properly. Waladur rajul salih. Yeah, just a second. The word adjective, is sifa. So they're saying if there is a mawsuf and sifa, so if there is a sifa of muzaf, let's go back. Rabbul Alameen, for example. Rabbul Alameen. This is muzaf. This is muzafun ilay. Okay. They're saying if there is a need to put a sifa of the word of the muzaf, if you need to have a sifa of the muzaf, remember what is sifa? Mawsuf sifa. For example, Rabbun Rahimun, a merciful Lord. Okay, this is the translation of Rabbun Rahimun. These two are common nouns. Okay, so you can translate Rabbun Rahimun, a merciful Lord. If you want that the word, the muzaf has a sifa, which is Rahim over here. If you want to put that, then you need to put it succeed the muzaf ilayh. Then you need to put the sifa over here. So you can put Rabbul Alamina Rahimun. Ar-Rahim, sorry, because the word Rabb is definite. Rabbul Alameen Ar-Rahimu. This whole phrase means the merciful Lord. Okay, this is the Mawsuf Sifa, merciful Lord of the worlds. In English, you can bring these two together, but in Arabic, you cannot put the word Rahim in the middle here. This is what they're saying. Does it make sense? Does it make sense or no? It makes sense. Yes, exactly. Okay, the merciful Lord of the worlds. This is the translation. Rabbul Alameen Ar-Rahim. Okay. You cannot put the word Ar-Rahim over in the middle, because you cannot have anything in the middle of Muzamazam. Okay, so this is a very special case, because when you read Mawsuf Sifa, the chapter, I think it was chapter number 3, lesson 3, over there you studied that Mawsuf Sifa cannot be separated. This is Mawsuf here, this Sifa. So the only exception to separate them is this Muzaf Muzaf ilayh case. So Muzaf Muzaf ilayh takes precedence
and you can separate them by putting the mudaf ilayh in the middle. You cannot put other things in the middle. The other example they give is this one, waladur rajul salihu. This word salih is the sifa of the word walad. Okay, this is what you need to understand. The word salih is the sifa of the word walad, the pious son. Okay, the pious son. Somebody can think and get confused that maybe the word salih is the sifa of the word ar-rajul, but this is not the case here. So the pious son of the man. Now I can give you another example is maybe they give it. Yeah, they give this next one here. Waladur rajul salihi. Okay, now if you look at this, because of the kasra on the salih word, the ar-rajul and as-salih, these two match in all four things. Over here, these two were matching in all those four things. What are the four things? Marfu, singular, masculine, definite. Four things need to match in Mawsuf Sifa. So walad is first of all definite. As-salih is definite. This is singular. This is singular. This is masculine. This is masculine. This is marfu because of the dhamma. This is marfu because of the dhamma. But the word ar-rajul over here is majroor because it is mudaf ilayh. These two are marfu. These are the i'rab. Both of these are marfu. Because of this dhamma here, we can understand that the sifa as-salih is that of the walad, the son. Hence, you translate the pious son of the man. In the next one, there's a kasra on the word salih. Because of the kasra, it does not match with the marfu state of the walad, but it matches with the majroor state of the of ar-rajul. Hence, because these two match in all four things, they are both definite, they're both singular, they're both masculine, they're both majroor. Hence, you translate the son of the pious man. So the pious man, ar-rajul salih, becomes the mudaf ilayh. This is the whole mudaf ilayh, and walad is the mudaf of that. This is a very important distinction. So does it make sense? Does it make sense fully? साजी लाइक डिफरेंस की बेसिस क्या है उसका मरफू होना है फिर मजरूर होना बस Exactly, yes. और अगर मरफू होगा तो वो फर्स्ट जो मुदाफ है उसके साथ रिलेटेड होगा, अगर मजरूर होगा तो मुदाफ इलैह के साथ। अगर मजरूर होगा तो मुजाफ इलैह के साथ फॉर श्योर। अगर मरफू है तो फिर हम देखेंगे कि मुजाफ मरफू है कि नहीं। अगर मुजाफ भी मरफू है तो इसका मतलब है कि वो है, क्योंकि मुजाफ में भी मजरूर, मुजाफ में भी मंसूब, देयर मुजाफ कैन बी एनी ऑफ द थ्री। इन द एग्जांपल गिवन इट्स मरफू। या ओके, तो यानी कि अगर मुदाफ और लास्ट वर्ड मैच कर रहा होगा तो फिर वो मुदाफ से रिलेटेड होगा। आपने आखिरी बात क्या कही है कि अगर मजरूर ना हो तो फिर क्या केस होगा? मैंने कहा मुजाफ जो है वो हो सकता है मंसूब हो या मजरूर हो। फॉर एग्जांपल मालिकी यौमिद्दीन, जी जी, राइट। यहाँ पे द वर्ड मालिक is majroor, but it's not majroor because of izafa, it's majroor because of some other reason। ठीक है जी। सो इस केस में मालिक यौमिद्दीन, इस केस में अगर हम एक सिफा लेना चाहते हैं फॉर द वर्ड मालिक, if you want to say malikun kabirun is the what we want to use, so here we will say al kabiri, but it's still gonna come in the end। okay now अब इसके अंदर डिस्टिंक्शन करना कि कबीर इज द कबीर सिफा ऑफ यौम और इज द कबीर सिफा ऑफ मालिक और इज द कबीर सिफा ऑफ अद्दीन, ऑल दीज आर पॉसिबल। ठीक है,
all these are possible. It's not easy to understand. No, just looking at the words, you now then have to look at the meaning and the context to exactly get this. Because a yawm can be kabir, but it doesn't make a lot of sense. Din bahut bada nahi ho sakta, right? Agar din tawil ho, you can use the word tawil if the day is really long. But kabir is a slightly different side. So possibility of deen is a little less. Sorry, of yawm. Possibility of a deen is also a little less, because deen refers to the qiyamah here, or even if in this case it refers to the qiyamah, but let's say it does not, there's something else that there is some matching. So in that case, you may be able to say no, kabir is the sifa of ad-deen. In this particular case, it's easier because we know kabir is usually gonna be a sifa of only the word malik. Okay. Yes, sir. But grammatically, all three are possible. ठीक है? समझ आई? इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? Anyone? What does Kabir mean? Kabir means big. Malik is the owner. Ustad, I do have a question. I'm a bit confused. I know you just explained this, but I'll be honest, I lost focus. You're saying that over here, Kabir can be the description of any of the three words before it because it's the same. It's the same, but no, sorry. Ad-Din hai, right? So Ad-Din or Al-Kabir same wo hai, Al and Majroor. So ye Kabir means Ad-Din. Kabir is No, a description of Ad-Din. No. Alif Lam is not sufficient, because Alif Lam indicates it being Marifa. Okay, Alif Lam tells that it is Marifa, yes, but the word Yawm is also Marifa, and the word Malik is also Marifa. These don't have Alif Lam, but they are Marifa because they are one of the 7 types of Marifa. Oh, so then in that case, yeah. So then in that case, Al-Kabir can be a description of any? Yes, it can be a description of any of these three, yes. And then how do we know which one? Yeah, so in this example, it can be a description because it matches in all 4 words are singular, all 4 words are masculine, all 4 words are marifa, right? All 4 words are majroor. The 4 things that need to match for Mawsuf Sifa, the state, the singularity, masculinity, definite, whatever, these 4 things, all of these are matching in all these 4. So it's very difficult. Grammatically, it's basically impossible, you can just say. Grammatically, there's no reason to, there's no way to specify it. Then you need to look at the meaning and the context. So we are saying that a day, this is a day, right, is not usually described as a big day. Maybe it is. Your graduation day is a big day, maybe. If it is, then I'll have to remove this cross. But let's say it is not usually. And similarly, usually, let's say the ad-deen is not referred to as kabir, big deen. But honor can be big, let's say. So in that, this is all subjective. It all depends on the meaning. Okay? If somebody wants to say big day, right? The honor of big day of ad-deen, this is correct. Like the Arabic of this is correct. Similarly, the big honor of day of ad-deen, this is also correct. So grammatically, all these are the same here. And this Arabic can mean any of these. And then there are other possibilities as well. ठीक है? So, उस्ताद इसका फिर अगर कोई conversation में ये बोलता है, then is there a way to speak it in a different way कि meaning सही वाला comes across? English के अंदर भी कुछ words होते हैं जिसमें अगर आप एक word पे ज़्यादा emphasis देते हैं तो meaning बदल जाता है.
right? जैसे uh, Rohel's blue car, तो मैं कहूँगा Rohel's blue car या Rohel's blue car. So इन दोनों words में एक difference आ गया. So उसके अंदर भी कोई, is there a different way to say it to get the different meaning across? Acha. So you can, if you're in conversation, you can the thing that you're saying in English can be applied in Arabic, but in Arabic there's more detail in the sense that you don't need to even emphasize a word or stress a word over the other word to clarify the meaning. In this case, in this particular phrase, there's no way, but you can say the same phrase in a different way. You can separate the two words, like you can say Malik Yawmiddin first, and then later on say that the Malik is also Al Kabir. So there are other ways to say the same thing if it's going to cause any confusion to the reader or to the listener. But the other thing that you mentioned, that in English, if we stress on one word and not the other, it changes the meaning a little bit. This is not there in Arabic, because you don't need it in Arabic actually. In Arabic, by the arrangement of words, you can change this stress level. Inshallah, kabhi mauka milega to we can talk about this. So the word that you bring in the beginning of a sentence is going to be more stressed usually. So inshallah, I think किसी time पे हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि in English you are dependent on the tone and you're dependent on the intensity of the tone to get to the meaning. In Arabic, it's not necessary. You can get to the intensity of a meaning by just arrangement of the words. Okay, jazakallah khair, sir. ठीक है? It's in Arabic. It's very easy to bring a word before or later and still keep the same meaning. Just like in Urdu, आप अशार पढ़ते हैं ना उर्दू में, वो है कभी शुरू में आ जाता है, कभी आखिर में आ जाता है, कभी वो वर्ड्स आगे पीछे होते रहते हैं, मीनिंग समझने वाला समझ जाता है, राइट? इंग्लिश में ऐसा नहीं है, राइट? इंग्लिश में यूजुअली ऐसा नहीं है. खैर, तो that's a separate point, separate topic. Okay. Any other question on this? So when arrangements like this, can confuse a person, then it's better to not use these arrangements. And so like this one, in such cases, it's better to just separate them and say these things in different sentences or different words. Sure. Again, at least for 3 words, I think it's sometimes very necessary to use this and this. So here you can just understand it based on the state of the last word. Okay, it's not, by the way, always a problem. For example, the case of ghulamul mar'ati salihu, this means the pious slave of the lady, right? Because the ghulam and salih are the mawsuf sifa. If you want to say the pious lady, you can say ghulamu al mar'ati, oh man, as salihati, because now this has to be feminine for you to say pious lady, right? And because it's feminine, there's a ta around ta in the end, the word salih, so it's easy to distinguish it. So yeah. Achha. So I like this one. Bintur rajuli as-salihatu and bintur mar'ati as-salihati. I think this is similar to these other 2 examples. Again, the dhamma here indicates the sifa of bint. The kasra here indicates the sifa of mar'a. Okay. Right. More rules of izafa are discussed in lesson 11. All right. I think the main thing you can probably, this is by the way not a very common usage. Like you don't normally come across muzaf alayh pair joined together very frequently. So the main point here was to remember that the sifa, if it has to come, it has to come after muzaf alayh. If the sifa of the muzaf, the sifa of muzaf alayh, of course, has to come after muzaf alayh. Okay. Okay, now after this is the list of vocabulary. So there are some very important words. This is actually a verb, a'uzu.
You will probably do it very soon in your, or maybe you have already done it. I'm not sure, in your Sarf class. But inshallah, you need to be learning verbs soon. Okay, Ma Masuda also comes. Okay, but let's ignore that. You just need to read these and make sure you get most of these, inshallah. Okay, this is an important topic. So here under are some hurufun jara which appear before nouns and convert them to halatul jar, which is the genitive case. These are words which are called hurufun jara. Okay, the words in this column, and these appear before nouns. Okay, harful jar always comes before an ism. So this is not part of muzaf ilayh, but it's very close, very related, hence they bring it here. So example is the word ba. So means the word ba with a kasra b means with or in. Example is bi rajulin, means with a man. Another example is bil qalami, with the pen. Okay, so they give every word and its meaning, and then two examples. One example with the nakira, other with marifa. So fi means in, and fi baitin, in a house, fil bustani, in the garden. Okay. Ala means on top of something. So ala jabalin, on a mountain. Ala al-arshi, on the throne. Okay. Again, the throne, because al-arsh, this is marifa. Jabal is not marifa, so on a mountain. Min means from. Min zaidin, from zaid. Min al-masjidi, from the masjid. Ila means to, towards or until. Ila baladin, to a city. Ila al-kufa, to Kufa or till Kufa. All these are points. Till, to, and until. Ila is used for these. Okay, li, just lam and kasra before ism, means for, indicates possession. Can indicate possession, actually. It can also indicate other things. So li zaidin, for zaid, or belongs to zaid. For example, lillahi ma fis samawati. Ma fis samawati. Okay, fis samawati, in the heavens, is fis samawati. Then ma fis samawati is whatever is in the heavens. And then lillahi, there is a lam kasra in the beginning of the word Allah. Okay, so it says this. So when we combine it, this is because it's hamzatul wasl. When writing, we get rid of it, and then there are two lams together, so we merge them into one. So it becomes lillahi is actually lam kasra and the word Allah, meanings for Allah, or belongs to Allah. What belongs to Allah? Whatever is in the heavens. So it indicates possession, it indicates ownership, etc. Qultu li Zaidin, I said to Zaid. This two, it can also mean two here. But the thing you need to remember is all these huruf jara, they come before an ism. So let me write before an ism. Harful jar comes before an ism, and second makes the ism majroor. Okay, these are very important 2 points of this. And these are huruf. Huruf, it's not an ism and not a fi'l, it's a harf. Next is ka, means like and similar. So karajulin, like a man. Kal asadi, like similar to the line. An is from, so an zaidin, from zaid. Or anillahi, from Allah. Or you could have an some like a common noun as well, if you want to make another example. Okay. For now, you guys can just memorize the meanings of all these words on the left. These are 7, 8. Memorize the meanings of all these words and then see their uses in different sentences, inshallah. And you need to remember these two rules about these. They are not
actually really part of izafa, mudaf ilayh concept, but it's very close and very related. That's why they mention it. Okay, any question on this? No, Saji. आंखों से नींद टपक रही है तो ये काफी माफी है ये सवाल उस्ताद जी. okay. So now you guys are equipped to do a lot of work. So inshallah you should do the assignment, complete the assignment. My plan was to do practice after finishing this lesson. The sentences or words given over here are easier. The things I wrote, which are here on the right side, are maybe a little difficult. But let's do some of these at least, inshallah. So let's try to translate. First of all, try to identify mudaf ilayh or mubtada khabar or murakkab tawsifi in these sentences, inshallah, and then we can also translate with that. So let's start with this one. Let's start with the second one. Yes, Saji. Ji. So I'll do inshallah for in the beginning. So Alhamdulillah Rabbil Alameen. So very easy, right? Rabbil Alameen. Here I want to emphasize on the grammatical analysis of this. So the word Alhamdu is mubtada. Lillahi is the lam kasra, the harful jar, and the word Allah. Because of lam kasra, the word Allah becomes majroor. Okay, I told you two rules about haruful jara. That the second word is going to become, one of them was the second word, the ism that comes after the harful jara is going to be majroor. So the word Allahi gets a kasra. This is actually a complete sentence. Alhamdulillah is complete sentence. The word lillahi is the khabar. So mubtada and khabar complete, sentence is complete. The praise, and lillahi means for, indicating possession or ownership, is for Allah. Okay, the sentence grammatically is complete. There is a mubtada, there is a khabar. The mubtada is ma'rifa. Okay, and that's it. The khabar is actually a phrase here. It's not a single word. Okay, Alhamdulillah is a complete sentence. Then Rabbil. There's a rafa on Alhamdu. You're asking why is there a rafa? I'm asking how do you know there's a rafa there? Or yeah, why is there? Okay, so because it is mubtada, and every mubtada is gonna be marfu. Okay, got it. Yeah, mubtada is always marfu, khabar is always marfu. Both of these are marfu. Now khabar here is not a single word, it's a phrase, hence you can't show that rafa. Remember, ar-rajulu sadiqun. This is the ar-rajulu because it's mubtada. The dhamma is there. Sadiqun is again dhamma because it is khabar. This is a single word, sadiq. The man is truthful. Sadiq is a single word. When the khabar is a single ism, single, it's easy to indicate that if just put up the dhamma, it shows that it's marfu. Okay. But in the case of this one, lillahi, in the case of lillahi, it's actually lam kasra and then alif word Allahi. This whole thing is the khabar. Okay, you can even understand this in the meaning. The praise, this is the subject, is for Allah. Okay, this for tells you it's not, you're not saying the praise is Allah, right? You're saying the praise is for Allah. Hence you need the khabar is not just a single word Allah. The khabar is also with the lam kasra. Hence
because of the harful jar lam, the word Allah is gonna get kasra. And so when it's a phrase, you cannot show the halatul rafa in any form. So that's why you don't see a dhamma on the word Allah. But for mubtada, it's very clear because it's a single word. All good? Okay. So that's why you have a dhamma here and a kasra on the word Allah. Then this is mubtada and khabar. Rabbil alameen. Can anyone tell me why there are many things? Why does it have a kasra? Why doesn't it have a double tanween, double like kasra? Why doesn't it have alif lam? Why does it have a single kasra? The word Rabb. Because the word Rabb is not. Yeah, the word Rabb is muzaf, and muzaf can't be tanween or have an Very un. good. Very good. Just because it is muzaf, it cannot have any of these two. Yes. But why does it even have a kasra in the first place? Muzaf can be dhamma, can have a dhamma, muzaf can have a fatha. This is where you relate it to the rest of the sentence. वो बा जो है वो उसका है रब जर वाला है. No, it's not the jar wala ba. That's an independent ba. This is the word Rabb. लेकिन वो जब उस पे आया तशदीद आई है उससे नहीं होता. No, the word Rabb has double ba inside it, meaning it has a tashdid. The root letters of Rabb are Ra, Ba, and Ba. There's alamina, so that's in the jar state. Alamina is in the jar state. Yes, Yeah. that's fine. Yes. But why is the word Rabb also jar, majroor? That's the question. Sorry? This is correct. The word alamina is majroor because it's muzaf ilayh. Good. All others you also solved. The word Rabb is majroor. Why? That's the question. Oh. I think कि अल्हम्दुलिल्लाह मुब्तदा बन जाता है और रब फिर उसका आगे खबर है. No, the mubtada cannot be a whole sentence like this. Alhamdulillah is a complete sentence. You cannot say the full sentence Alhamdulillah is a mubtada. You cannot say that. And if you say that, then you're saying the word Rabb is khabar. But if the word Rabb is khabar, it must have been like marfu. Khabar is marfu. थोड़ा और सोच लें फिर मैं बता दूंगा. Rabbil Alameen, the sifat of Allah, Mawsuf sifat. Exactly. The word Rabb, yes. The word Rabb, just the word Rabb, is the sifa. The word Rabb is the sifa of the word Allah. Allah. Yes. So the word Allah and the word Rabb. This is Mawsuf. This is sifa. Yes. Right? Allah is the Lord. Exactly, mashallah. So when they are Mawsuf and sifa, then they need to match in the four things. What were the four things? Marifa. For the first word is Allah, that's Marifa. The word Rabb, is it Marifa? Yeah. Yes, because it is. Why is Marifa? It's because it's an explanation. It's something associated with a marfa, which is Allah. No, it's because it's associated with it. It is muzaf to a marifa thing. The muzaf ilayh is marifa.
right? The mudaf ilayh is ma'rifa. So Rabbil Alameen is a mudaf ilayh pair, because the word Alameen is ma'rifa, hence the word Rabb is ma'rifa. We cannot put alif lam on the word Rabb because mudaf cannot have alif lam. So we are verifying that the word Rabb is a sifa of the word Allah by checking all four things. First of all, both are ma'rifa. The word Rabb is ma'rifa clearly because it's mudaf ilayh. So whenever you see a sentence, I think the first things should be to identify mudaf ilayh, if there is any. Okay, and then harful jar and majroor. These must be probably the first things to look at, because it's needed, right away. Sifa mawsuf you can do at the next step. Okay, first they are ma'rifa, both of them ma'rifa, both of them are singular, right? Both of them are masculine, and both of them are have or majroor. Both have the same grammatical state. The word Allahi is majroor because of the lam, because of this lam. Oh man. Because of this lam, the word Allah is majroor. So we make the word Rabb also majroor to make sure that they match in the halat, grammatical state. So that's why the word Rabb is also majroor, because the word Allah is majroor, because we need to make sure that they match in all four things. Okay. So this whole part, Allahi Rabbil Alameen, is Mawsuf and then Sifa. And then Sifa itself is composed of a Mudaf and Mudaf ilayh. Right? The Sifa, Rabb, is a Mudaf to something Mudaf, some Mudaf ilayh. And so in Surah Al-Fatiha, everything that comes later, Ar-Rahman, right, also has a kasra, single. Ar-Rahim. All these are sifas. Maliki, the word Malik is again kasra because it's also sifa. So Ar-Rahman, Ar-Rahim, and Malik, all these are sifa that keep coming one by one of the word Allah. Okay. So that then completes the sentence. I mean, actually, sentence just completed here. All praise belongs to Allah. Who is, then you're explaining just the word Allah. Or you're explaining who Allah is. He's Rabbil Alameen, He's Ar-Rahman, He's Ar-Rahim, He's Malik Yawmiddin. All these are qualities of Allah. And then where Iyaka Na'budu starts, that's where there's a full stop. The next sentence starts from Iyaka Na'budu. Okay, let's finish this last part. This is a separate sentence now. So who can tell me what is what here in this sentence? Remember, there are three main concepts you've seen: Mudaf ilayh, Murakkab Tawsifi, and Mubtada Khabar. So tell me, what are all these here? So the easiest one and the obvious one is if we see an ala, so that means the Rasul would be Rasulihi, like Majroor state. Okay. Very good. Yes. Yes. Rasul is the Mawsuf, or Kareem is his sifa in this case. Exactly. Very good. Very good. The word Rasul is Mawsuf. Al-Kareem is sifa. Hence, the word Kareem is going to get a kasra, because the word Rasul has a kasra. And the word Rasul has a kasra because of ala. Okay. So very good. So you basically deciphered this phrase first, and then you deciphered this part, ala rasulihil kareem. Now tell me, what is this ala rasulihil kareem becoming in the rest of the sentence? For something to be a sentence, you guys have only seen jumla ismiya. So
For any jumla ismiya to exist, you need to have mubtada and you need to have a khabar. What is the mubtada? What is the khabar? So that would be wassalatu wassalam. Yeah. So this is mubtada. Actually, the whole thing you can just say mubtada. Wassalatu wassalamu, the two things, salat and assalam. You can say as-salat is one mubtada, as-salam is the second mubtada. That's also fine. Okay. This bow just makes it counts. You can use it to count multiple of something. So wassalatu wassalam is the mubtada and ala rasulil kareem is the khabar. Okay, means that the salutations and the blessings and salam should be on Rasulil Kareem, a Rasul of Allah. This he in the word Rasuli refers to Allah. It's a pronoun. His Rasul. So Rasuli, he is actually Muzaf Muzaf ilayh. The word Muzaf in this is Rasul. This he that comes with Rasul ha is the Muzaf ilayh, his messenger. Okay, let's inshallah stop. It's too late. So please finish the homework and do analysis like this, and we can do more practice inshallah later. Okay. Hopefully some of you are awake. Hafiz.